जून बोनांजा सेल आ गया है। अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग, साथ ही साथ 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। यही नहीं, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, बैंकिंग, ईपीएफओ, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ प्लस 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। 13, 14, 15 जून ओनली। हो जुनून तो सिलेक्शन सून। Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we are going to discuss two more applications from Greedy Technique. So, in today's session, we'll be talking about Huffman coding and optimal merge pattern. The concept of optimal merge pattern is very similar to Huffman coding. तो आज वाले सेशन में हम दो एप्लीकेशंस आराम से खत्म कर सकते हैं बिकॉज दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. वेरी गुड इवनिंग कंचन. तो कल वाले सेशन में हमने ग्रीडी टेक्निक स्टार्ट किया था. वी जस्ट डिस्कस्ड वन एप्लीकेशन दैट वाज रियल knapsack, fractional knapsack. So anyone having any doubt in the fractional knapsack? तो सिंपल सा स्टेप था. फ्रैक्शनल knapsack means the goal was to earn the maximum profit. Constraint was the total weight of all the objects was much more than the capacity of the knapsack. So all the objects cannot be carried, but in order to get the maximum profit, we were using the approach keep if it's greedy about both profit and weight, then we'll get the maximum profit. तो उस केस में क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम profit upon weight ratio find करके we are identifying that per unit weight कितना profit हो रहा है, जिसमें भी maximum profit हो रहा है. We were picking up those objects and after that we'll go to the next object like that. कब तक ये process repeat करेंगे, जब तक capacity zero नहीं हो जाती. उसके बाद जिस भी रेशो में ऑब्जेक्ट्स लिए उस रेशो में प्रॉफिट मिल जाएगा. टेक द सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स and we are done. So in this case, we were getting the overall complexity of the algorithm as n log n. I hope that इसमें किसी को कोई problem नहीं है. Yes? Okay. So next one is Huffman coding. Anyone having any idea about the Huffman coding? Obviously, नाम से समझ में आ रहा है, this is one of the encoding technique. Okay, that means it is used to generate the codes. Now codes कैसे generate करने हैं, that will talk in this application. Okay, and moreover this is one of the application of a binary tree, so we can say that it is one of the application of the binary tree, because here whatever data will be given to you, on the basis of that will be constructing a binary tree starting from the leaf nodes. So one of the application of binary tree, it is an encoding technique. You can also say that this is a data compression technique. Data compression technique. Okay. कैसे वर्क करती है, कब वर्क करती है? लेट्स से आपको कुछ वर्ड्स गिवन है एंड अलोंग विद दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इज गिवन टू यू, और आपको ये फाइंड करना है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर मैसेज को भेजना है तो ऑब्वियसली बात है कि एक मैसेज में कुछ वर्ड्स होंगे जो रिपीट ज्यादा टाइम हो रहे हैं, कुछ कम टाइम रिपीट हो रहे होंगे, कुछ एक या दो बार ही आ रहे होंगे. उसको मैं बोल रही हूँ फ्रीक्वेंसी. तो उस मैसेज को भेजने के लिए कितनी बिट्स जाएंगी, बिकॉज इन अ कंप्यूटर सिस्टम whenever we are sending any message, the data is transmitted in the form of bits, right? तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी बिट्स जाएंगी एंड द गोल इज टू सेंड मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स. Okay, that will reduce the overhead. So let's consider one example. Let's assume we are given with the data. I want to send a message. जिस message में हमारे पास 6 characters आ रहे हैं. It can be any 6 characters. I'm taking A, B, C, D. So these are the characters. जिन characters से message बना है. Characters are A, B, C.
D, E, and F. And corresponding to each character, you will be given with the frequency or the probability. Probability means अगर 100 times कोई character आने हैं तो उनमें से A आने की probability क्या है? So that is probability. So either you will be given with the frequency of a character or you might be given with the probability of a character. Okay. So let's assume that the frequency of A is 50. For B, it is 5. For C, it is 4. For D, let's say this is 10. This is 30 and this is 1. Something like this. Okay. So that means in total, how many characters are sent in a message? Just take the sum 50, 59, 60 and 40, 100. So in total, 100 characters will be sent in a message. Now by default, अगर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते, by default how many characters will be sent? हमें बाइनरी बिट्स कैलकुलेट करनी है तो किसी भी नंबर को सेंड करने के लिए वी कंसिडर द ASCII कोड, right? So in order to represent A, how many bits are required? 7 bits are required, right? Because for A it's 65 and for small a it's 97. So anyhow to represent both capital आ रहा है या small आ रहा है तो 7 bits are required using the ASCII code. Similarly for representing B also 7 bits are required. C के लिए भी 7 bits चाहिए, D के लिए भी, E and F. तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की बजाय हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू ASCII कोड, in order to represent each character, 7 bits are required. And also here we are given that we are given with a message of 100 characters. So total bits required to send 100 characters. What will be that? एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स चाहिए. 100 bits को send करने के लिए how many bits will be required? It will be 100 into 7. So that comes out to be 700 bits are required using the first approach, that is ASCII code. Using the ASCII code, 700 bits are required. Can we reduce it? Yes, there is one possibility. हमारे पास 5 characters है, एक character को distinguish करने के लिए, sorry, 6 characters are there. So in order to represent each character or in order to uniquely identify each character, how many bits are required? Or let me ask this question in other words, there are 6 combinations. In order to 6 combinations है, 6 characters है, एक combination या एक character को represent करने के लिए कितने bits चाहिए होंगे? I'm going to talk about the uniform coding. With 2 bits, we know that 4 combinations are possible. अगर हम 2 bits लेते हैं, like 0, 0, 2 bits के साथ कितने combinations बनेंगे? 4 combination, क्योंकि एक bit को हम 0 या 1 ले सकते हैं. 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. There is no other possibility. So with 2 bits, 4 combinations are possible. With 3 bits, 8 combinations are possible. हमें 4 से ज़्यादा चाहिए, 8 से कम चाहिए तो 3 में काम चल जाएगा. 2 bit से कम तो नहीं चल सकता because it's maximum representing 4 combinations. So here, let us assume that in order to represent A, I'm using triple zero. To represent B, I'm using 001. For C, I'm using 010, 011, 100, 101. This is to represent D, to represent E, to represent F. This indicates that to represent each character, to represent each character, 3 bits are required. 3 bits are required. Obviously 7 bits से कम हो गया, 3 bits are required. Now in order to represent all the 100 characters, to send a message,
to send a message of 100 characters, number of bits required are number of bits required will be equal to how much? 100 characters are there. There are 100 characters, and in order to represent each character, 3 bits are required. So it is 100 into 3, that comes out to be 300 bits. Reduce हुई bits? Definitely from 700 bits, it has reduced to 300 bits. Data compress हुआ? Guys, कोई response नहीं आ रहा है. I hope I am audible and visible. Am I audible? Come on. Good evening, Prashant. Guys, ये clear हुआ? Now we want to reduce it further, like 700 से 300 पे आए, इससे आगे reduce करना है. So for that we are going for one more concept, that is Huffman coding. So that's why we are saying that Huffman coding is one of the data compression technique. Okay. अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एसकी कोड हम यूज कर चुके, यूनिफॉर्म कोडिंग हमने देख लिया. नाउ विल गो फॉर नॉन यूनिफॉर्म कोडिंग. नॉन यूनिफॉर्म कोडिंग मींस जो कैरेक्टर बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है उसको कम नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट करो. इफ एनी कैरेक्टर इज कमिंग फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स और 1 or 2 टाइम्स, अगर उसमें आपके पास 5 बिट्स भी आ जाएंगी, then even it will reduce the data. So basically that is the concept of non-uniform encoding. So Huffman coding is nothing but that is non-uniform encoding technique. That means for different set of data, we are taking different number of bits to represent it. This is non-uniform encoding technique. I'm taking the same set of data A, B, C, D, E and F. These are the different characters with the frequencies 50, 5, 4, 10, 30 and 1. These are the frequencies given to you. Now we have to start with we will start constructing a binary tree. Huffman coding is nothing but this is one of the binary tree, application of binary tree. Binary tree means हर node के maximum 2 ही children होंगे. So here the idea is to take the 2 minimums. We'll start constructing from the tree. हम tree construct करना शुरू करेंगे by taking the first 2 minimum values. अब यहाँ पे पूरे ट्री में हम फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, कौन से कैरेक्टर्स के लिए आ रही हैं. This is, or you can minimum चाहिए तो what we can do is we can sort them out. For the F, character F के लिए frequency is 1, then for character C frequency is 4, character B frequency is 5, character D frequency is 10, character E frequency is 30 and character A frequency is 50. Will start by the first 2 minimums, और इनमें ज्यादा bits अगर use करेंगे तो overall पे anyhow it will reduce the number of bits. And make sure whenever we are constructing a tree, when we are assigning the codes, we need to follow one pattern, क्योंकि यहाँ पे हमें code generate करना है. एग्जाम में question नंबर ऑफ बिट्स पे भी आ सकता है और कोड आइडेंटिफाई करने पे भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको मैसेज गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसके इक्विवेलेंट कोड क्या जनरेट होगा, और यू माइट बी गिवन विद अ एनकोडेड मैसेज और आपको डीकोड करना है कि कैरेक्टर्स में व्हाट विल बी दैट मैसेज. तो दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोड्स यूनिकली. तो इसके लिए क्या करते हैं,
if we are combining two nodes, if we are taking two nodes, we'll be keeping the node with the smaller value on the left hand side. ओके अगर किसी नोड में फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है विल कीप दैट ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज द आइडिया. So now I'm taking the first two minimums, that is 1 and 4. F को कहाँ पे रखेंगे? To the left side. So I'll be keeping this on the left side. Its frequency is 1. This is for F. And then is C. Its frequency is 4. Now we'll merge it up. Merge करने के बाद this comes out to be 1 plus 4 is 5. Now take the next node. एक node already आपके पास आ रही है. We'll be taking the next one, or you can insert it back here. Now take the next two minimums, that is 5 and 5. 5 and 5, this is already present, so I'll be taking one new node. If it's greater or equal, we'll be keeping that on the right hand side. So 5 is equal to 5, so I'm taking this on right hand side. When I'll merge it up, जब combine किया, we are getting the value as 10. Now take the next two minimums. 10 यहाँ पे आ गया. Take the next two minimums. Next 10 is greater than or equal to 10. Yes. So here I'll be taking 10. This is for D. Now merge it up. This comes out to be 20. एक node already आ रही है, so we need the next one. So here we'll be getting 30. This is coming on the right hand side because 30 is greater than 20. So obviously हम इसे right hand side पे लेंगे. This is E. Are you getting what I'm doing? Now we'll merge it up. This comes out to be 50. Now take the next one. This is for A. 50 and we'll merge it up. And finally merge करके आपके पास root node आ गई and all the characters are taken into the consideration. Total is 100. और यहाँ पे जो total characters थे आपके पास those were 100. तो जब आप ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे रूट नोड पे आपके पास या तो टोटल, अगर फ्रीक्वेंसी ना देकर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी रूट पे. अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी रिप्रेजेंटेड एट द रूट लेवल. ओके, सो दिस इज द ट्री. नाउ विल बी गेटिंग अ कोड. अब हमने ये बोला कि स्मॉलर वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे रखो, ग्रेटर को राइट हैंड साइड पे रखो, तो कोड्स भी असाइन हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करेंगे. आई एम असाइनिंग द वैल्यू 0 टू by default. On the left hand side we are taking 0 and on the right hand side to the right child one value is assigned. So this is the fixed pattern. But sometimes in the exam they might be taking 1 to the left for the left child and 0 for the right child. तो उसमें आप अपना 0 1 के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोड जनरेट करो. वहां पे अगर 0 की जगह 1 आ रहा है, 1 की जगह 0 आ रहा है, सो इजीली यू कैन रिप्लेस इट. दैट इज नॉट अ मेन इश्यू. इतना क्लियर हुआ? Now I'm going to assign the codes. This is to the left child I'm assigning 0, to the right child 1, to the left child 0, to the right child 1, to the left child 0, to the right child 1, to the left child 0, right side 1, 0 and 1. Assigned. Now I want to identify the codes. For A के लिए code क्या है? Let me write here. For A, I want to identify the code. यानी कि आपको कोड कैसे फाइंड करना है? रूट नोड से शुरू होकर जो भी आपके पास कैरेक्टर्स थे A, B, C, D, F, you can observe here all these are the leaf nodes in the binary tree. So you have to start from the root node. You have to follow the path to reach to that particular character. तो A तक पहुंचने के लिए बीच में एक ही एज आ रही है and that edge is assigned with the value 1. This means that the code for representing A is 1. To represent B, B is present here. See what path will be following here. Tree में हमेशा आपको unique path मिलता है, तो obviously there is no possibility of getting more than one code to represent one character. तो B तक पहुंचने के लिए कौन सा path follow करेंगे? This is the path. So it's starting from the root node. It's 0, 0, 0 and 1. That means to represent B, it's taking 0, 0, 1. To represent C, C is available here. So this is 1, 2, 3, 4 and 1. 4 zeros followed by 1.
For D, this is 001. For E, it is 01. For F, this is 5 zeros. ये समझ में आया? अगर आपसे कोड्स पूछे तो आप कोड्स represent कर सकते हो. So here we have got the codes. So we have said that this is one of the encoding technique. Codes आ गए. डेटा कंप्रेशन टेक्निक है. तो अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, आपको कोड्स पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू सेंड दिस मैसेज. ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट चाहिए, 1 बिट इज रिक्वायर्ड, और लेट मी टेक दिस एज 50 कैरेक्टर्स. ए की फ्रीक्वेंसी 50 है, एंड इन ऑर्डर टू सेंड ए 1 बिट इज रिक्वायर्ड, 1 bit. This comes out to be 50. B, C, D, E and F. Can you calculate the total number of bits required to send all these 100 characters? Frequency of B is 5. B को represent करने के लिए, in order to send single B, 4 bits are required. 4 bits. So this comes out to be 20 bits. 50 bits are required to send all the A's, 20 bits are required to send all the B's. Then to represent C, frequency of C is 4, 10, 30 and 1. In order to send single character C, 5 bits are required. तो 4 के लिए again 20 bits are required. In order to represent D, it's taking 3 bits, so this comes out to be 30 bits. In order to represent E, 2 bits are required, so I'm taking here 2 bits. So this is representing 60. 60 bits are required. Then to represent F, 5 bits are required, so it takes 5 bits. So total how many bits will be required to send all the characters of the message? That is 50 plus 20 plus 20, 90, and 120, 180 and 185. So in total, 185 bits are required to send a message of 100 characters. अगर हम फर्स्ट टेक्निक देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एस्की कोड 700 बिट्स वर रिक्वायर्ड, देन बाय यूजिंग द यूनिफॉर्म कोडिंग इट वाज रिड्यूस्ड टू 300 बिट्स. फिर उसके बाद हमने हफमैन कोडिंग यूज किया एंड इट इज रिड्यूस्ड टू 185 बिट्स. कैन वी रिड्यूस इट फर्दर? नो. सो 185 bits will be sent to send a message of 100 characters. ये क्लियर हुआ? Anyone having any doubt? Basically here the idea is, you can say the logic is, the character which is repeated, जो भी character ज्यादा बार repeat हो रहे हैं उसको root के पास रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जितना root के close होगा उतने ही number of bits कम required होंगे. If the frequency is more and for more frequency we are taking a less number of bits, definitely it will reduce the overall requirement of the bits, right? So this is the idea. So the character which is repeated, it's going behind the image. Hope it's visible now. The character which is repeated more number of times consumes less number of bits. तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर वो कम बिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ओवरऑल बिट्स विल बी रिड्यूस्ड. ये आइडिया क्लियर हुआ? समटाइम्स दे मे आस्क फॉर द एवरेज बिट्स रिक्वायर्ड पर कैरेक्टर. तो एवरेज कैलकुलेट करना है आपको. एवरेज विल बी टोटल bits divided by the frequency. So average bits required will be total number of bits divided by number of characters. So in this case we are having 185 bits
and characters are 100 characters. So we can say that average comes out to be 1.85 bits per character. 1.85 bits per character. Whereas in case of uniform coding, it was taking 3 bits per character. In ASCII code, it was taking 700 bits per character. Is this clear? तो हफमैन कोडिंग में आइडिया इज कि बिल्कुल लीफ लेवल से स्टार्ट करो, टेक द टू मिनिमम्स, कीप द मिनिमम वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड उससे ग्रेटर वाली शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. प्रॉपर फॉर्मेट करना जरूरी है बिकॉज हियर वी वांट द कोड्स हियर. ओके, कोड्स के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग चाहिए. और लेफ्ट हैंड साइड पे देन वी हैव असाइंड 0 एंड टू द राइट हैंड साइड वी हैव असाइंड 1. So complete idea is on the screen. Anyone having any doubt? I'll talk about the complexity as well. But अभी पहले concept को understand करते हैं, then easily you'll be able to identify, find out the complexity. Guys, those who are new, I'll be sharing this PDF in the Telegram group, that is Shefali ma'am Testbook. तो इसमें ये जो भी मैं examples करवा रही हूँ, जो भी मैं लिख रही हूँ, everything will be there in the PDF format and it will be shared in this group. So you can join this group in order to get the links of all the YouTube sessions, live sessions के link के लिए, PDF के लिए. And apart from that, अगर आपकी कोई भी doubt या query है, आप इस group में post कर सकते हो. You can directly interact with me. You can also participate in the quiz and the polls. Okay, so a link of this group is given in the description box. End पे मैं share करूँगी link कि आपको कहाँ पे मिलना है. I'll share the screen so that you can see what all links are given in the description box. Ma'am, why we assign 0 in the left and 1 in the right? Is it necessary? I already discussed this point. See, you have to follow a fixed pattern. Right side पे चाहे आप 1, left side पे चाहे 1 ले लो, right side को 0 fix कर लो. But it should not be a mixture of both. क्योंकि अगर प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे तो कोडिंग नहीं हो पाएगी. अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कोड ले रहे हो तो डीकोडिंग के टाइम पे इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. कैन बी असाइन एनी अदर थिंग? क्या असाइन करना चाहते हो? जब आप कोई भी डेटा को सेंड कर रहे हो, दैट इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस. ओके, मेरे हिसाब से बिट 0 या 1 होती है. इसके अलावा और कैसे डेटा सेंड कर सकते हो आप? व्हाट आर द अदर थिंग्स लाइक? What other options are there? हो सकता है कोई नया कॉन्सेप्ट निकल के सामने आए. सो लेट्स सी. अदर थिंग्स क्या हो सकती हैं? आइडिया इज टू सेंड अ मैसेज. मैसेज किस फॉर्मेट में सेंड हो सकता है? I guess no response. So, all right. Guys, I have given you one question. There is a message which is containing 5 characters M1, M2, M3, M4 and M5. Their frequency is given and you have to find out using Huffman coding that what will be the encoded message or how many bits are required to transfer a message. Instead of frequency, I can call this as a probability. अगर कोई एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, उस मैसेज में M1 आने की प्रोबेबिलिटी इज 0.45, M2 आने की प्रोबेबिलिटी इज 0.02 and M3 आने की प्रोबेबिलिटी इज 0.24, M4 आने की प्रोबेबिलिटी इज
0.11 and for M5 it's 0.18. प्रशांत, आई गेस आपका ये जो डाउट आया ना, पहले भी यही हुआ होगा कि आपने पॉइंट मिस कर दिया, अभी भी शायद आपने क्वेश्चन सुन के पॉइंट मिस कर दिया. So if still your doubt exists, please follow the recorded session. Okay, so what is the first step? What is the first step? अगर हमें Huffman coding use करना है, तो obviously we need to take the two minimums. We need to construct a binary tree basically, right? So from where we'll be starting this? कहाँ से start करेंगे? From the leaf level. Leaf level से भी कहाँ से start करना है? By taking the first two minimums. So what are the two minimums? Or let's arrange them. The very first step is arrange the frequency or the probability in the ascending order. Arrange the frequency or probability, whatever is given to you, probability of characters in the ascending order. Because every time I need two minimums. In fact, आपको अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है. एवरी टाइम आई वांट द मिनिमम वैल्यू, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैं हमेशा अगर एक एलिमेंट को डिलीट करूं, आई ऑलवेज बी गेटिंग द मिनिमम एलिमेंट. So here there are 5 elements. I want the first minimum. I'll be deleting one element and I'm expecting to get the minimum one. So what will be that data structure? Like, can you send message as AB? What is the idea? हमने ये बोला आपको मैसेज सेंड करना है. मैसेज कैसे सेंड होता है? इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. जब आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हो, whenever we are dealing with the data, it's in the form of binary bits. So AB is a binary bit. Everywhere we are representing the data in the form of bits. What do you understand by bit? हर जगह हम बिट्स की बात कर रहे हैं. AB तो मैसेज का पार्ट हो सकता है ना, मैसेज को तो भेजना ही है. Okay guys, I asked one question that what is the data structure from where every time I'll be getting the minimum value, because here when we are constructing a binary tree, we want the minimum value. See, if you won't be responding, we won't be able to solve more number of questions, and this is really a very important concept. आपको काफी questions मिल जाएंगे Huffman coding से. I'll be taking the first minimum and ये किस में मिलेगा? अगर आपने इन सारी प्रोबेबिलिटी से या जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, इफ यू आर गोइंग टू टेक द min heap tree में जब भी आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हो, दैट गिव्स यू द मिनिमम एलिमेंट. Every deletion operation will give you the minimum element. So data structure required here is the minimum one. Okay, data structure required is the min heap tree. So in the min heap tree, all these message characters are available. Min heap tree में ये सारे characters available है. अब क्या करेंगे? एक एक करके delete करना शुरू करेंगे. पहला character delete किया, we got the minimum, that is 0.02. So I'll be going to the leaf level and this will be kept on the left hand side because this is smaller. This is for M2.
Now I'll delete the next minimum. So I'll get 0.11. This is for M4 and will merge them up. This comes out to be 0.13. अब हमें नेक्स्ट टू मिनिमम्स को मर्ज करना है. ये दोनों मर्ज हो चुके एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू, इसने किस में रिजल्ट किया? इट हैज रिजल्टेड इनटू 0.13. अब एक नोड आपके पास ये है, बाकी के जो एलिमेंट्स है वी हैव टू कंसिडर दिस. सो बेटर ऑप्शन इज इंसर्ट दिस बैक इन द ट्री. अब देखो sorted order में what next two elements are coming up. It's 0.13 and 0.18. So 0.18 is greater than 0.13. So I'll be taking this on the right hand side. 0.18. This is the probability of the character M5. Okay. Now merge them up. After merging it, we'll be getting 1, 3, 0.31. 0.31 will be coming somewhere here. Yes, so take the next two minimums, यानी कि 0.24 लेने और 0.31 लेने. 0.31 तो already available है. 0.24 को कहाँ पे लेंगे? Where should I take this 0.24? Since 0.24 is smaller than 0.31, so instead of taking it to the right hand side, I'll be taking on the left side क्योंकि ये smaller है. Yes. अगर स्मॉलर वैल्यू है तो हम उसको लेफ्ट साइड पे लेंगे. सो 0.24 एंड दिस इज रिजल्टिंग इनटू 0.55. we are getting here 0.55. 0.55 will be coming somewhere here. Basically what I'm doing is every time I'm deleting two elements and I'm inserting back one element in the min heap tree. Data structure you use हो रहा है, that is the min heap tree. So every time I'm deleting two एलिमेंट्स, हर एक स्टेप पे जब मर्ज हो रहे हैं तो दो मिनिमम एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं, दो डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और एक इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट will be combining these two. 0.45 is smaller than 0.55, so again I'll be taking this on the left side. 0.45. This is for M1. Now total is coming out to be 1.00. So we know that the total probability is always 1. ओके. अब आपके पास कोड्स जनरेट हो गए हैं. दिस वाज फॉर टू M3. Just assign the codes. So this is to the left side 0, to the right side 1, to the left child 0, 1, 0, 1, 0, 1. Codes identify कर सकते हो. What is the code for M1? For M1 अगर सिंपली आपसे बिट्स पूछी हैं तो आपको कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है. आप ये देख सकते हो, अगर ये फर्स्ट लेवल पे आ रहा है सो इट विल बी टेकिंग 1 बिट. इस लेवल पे जो भी नोड्स आएंगी उनको 2 बिट्स, क्योंकि इनका डिस्टेंस रूट नोड से कितना है, दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 बिट्स. तो आपको एग्जाम में कोड्स भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स. अगर कोडिंग या इनकोडिंग पे क्वेश्चन नहीं है तो सिंपली आप लेवल से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी बिट्स आएंगी. ओके, दिस मीन्स दैट M1 के लिए कितनी बिट्स आ रही है? इस लेवल पे सिर्फ M1 आ रहा है. M1 के लिए 1 बिट आ रही है. M3 के लिए देयर विल बी 2 bits. For M5 3 bits are required. For M2 and M4 4 bits are required. अगर कोड्स नहीं पूछे, सिंपली नंबर ऑफ बिट्स पे क्वेश्चन है तो आप लेवल से आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके. If they are asking for the code for M1, what is the code? For M1, it is 0. For M2, code is, for M2, this is 1, 1, 0, 0. For M3, code is 1, 0. For M4, code is 1, 1, 0, 1. For M5, code is, where is M5? It's 111. So you need not to find out the codes if they are asking for the bits. अब यहाँ पे M1 को represent करने के लिए 1 bit is required.
We need to see from the top. Obviously, root से start करके आपको leaf node पे पहुंचने, and that will give you a unique path. So what will be the total number of bits to be transferred? Total bits to be transferred, that will be for M1, it's 45 into 1 bit is required, plus 0.02 for M2, 4 bits are required, plus 0.24 into for M3, 2 bits are required, plus 0.11, 4 bits are required, plus 0.18 into M5 के लिए 3 bits are required. So these are the total number of bits required to transfer. Is this clear? So this comes out to be 0.45 plus 0.08 plus 0.48 plus 0.44 plus 0.48. तो बेसिक आइडिया इज आई गेस जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, दैट इज विद मेजर प्रॉब्लम इज वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ट्री. वो क्या कहते हैं, हमेशा नेक्स्ट नोड जो आ रही है इट इज ऑलवेज एडेड ऑन द राइट हैंड साइड. नो, एवरी टाइम यू हैव टू टेक द टू मिनिमम्स. ओके, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जो एग्जिस्टिंग है वही आएगा और एक नया एलिमेंट आएगा. जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो यू हैव टू पिक द टू मिनिमम्स फ्रॉम द दिस सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? This is for your practice. You are given with a file which is containing a few characters with the frequencies are given to you. You have to return the average code length. First of all, return the total number of bits required to send this message. Okay, I want you to return the total number of bits. And after that, I want you to return the average code length. Do we need to calculate the average number of bits in previous question? If they are asking that, then you can calculate it. But anyhow, वहाँ पे total आपके पास total average जब आप calculate करोगे, total probability is 1. Even if you are going to divide this number by 1, it comes out to be 1.99 only. Think logically. यहाँ पे आपको probability given है, and we know that the total probability is 1. Quickly try the next one. A file contains characters A, E, I, O, U, S, T with the frequencies 10, 15, 12, 3, 4, 13 and 1. यानी कि A की frequency is 10, E की frequency is 15, A, E, I, O, U, S, T. 2-minute wait, ma'am. Okay. So you know that you have to arrange them in the ascending order. Every time will be, or basically from the mini tree, every time will be picking up 2 minimums. I'll discuss the time complexity through this example also.
Tree construction done. Every time we have to take the two minimums. So minimum value is for T, 1, and then is for O, 3, U, 4, and then is for A, 10, I, 12, S, 13, E, 15. Right? Okay. Now take the first two minimums, that is T and O. तो T और O से construction start करेंगे. T will be on the left, frequency is 1, this is for T, and O is on the right, its frequency is 3. Merge it up. आपने दो minimum delete किए. I have deleted two minimums from the min heap tree. Okay, and after that when I'm combining it, whatever result is coming up, जो भी result आ रहा है उसको हम min heap tree में insert करवा रहे हैं. पहले क्या किया, एक डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, फिर दूसरा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, देन अगेन द डिलीट ऑपरेशन, एंड देन वी आर मर्जिंग इट, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हमने ट्री में इंसर्ट करवा दिया. नाउ हियर आई एम गेटिंग 4, so 4 is inserted here. Step 1 is over. This is for one step. Okay, now in the next iteration, in the next step, again we'll be taking the two minimums. Pehla minimum aaya, already we are having that in the tree. Take the next minimum. Since this value is equal, so I'm taking this on the right hand side. 4. This is for U. दो मिनिमम्स को डिलीट करवाया, उसके बाद इंसर्ट करवाएंगे किसे, जो भी इनको मर्ज करने के बाद रिजल्ट आएगा. वी आर गेटिंग हियर 8, so 8 will be inserted back. कहां पे आएगा 8? Somewhere here. Now again we'll be taking the two minimums. First minimum delete kiya, second minimum delete kiya. This is 10 and this is for 8. Then combine them and merge it. 18. 18 कहां पे जाएगा, अब इसको ट्री में डलवाना है. 12 से छोटा है, नो. ग्रेटर है, नो. ग्रेटर है, नो. 18 is greater. तो ये बिल्कुल एंड पे आ गया. Have you observed this thing? Now take the next two minimums. हर बार हमें दो minimums को ज्वाइन करना है. अब कौन से दो minimums ज्वाइन होंगे, that is 12 and 13. अब 18 को एक बार के लिए छोड़ देंगे. 12 and 13 are the next two minimums. 12 और 13 दोनों 18 से छोटे हैं, so I'm taking this on the left hand side. 12 this is for I and 13 this is for S. 13 12 से greater है तो मैंने right side पे लिए. Combine it. It is resulting into 25. आपने दो मिनिमम्स को डिलीट किया, जो भी रिजल्ट आया इसको वापस से min heap tree में इंसर्ट करना है. तो 25 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. 25 is greater than 15, 25 is greater than 18, तो 25 will be added after 18. Now take the next two minimums. Next two minimums में क्या आएगा, 15 and 18. 18 वाली नोट already आपके पास आ रही है. 15 is smaller than 18, so I need to take 15. 15 को कहाँ पे लेंगे, 18 के लेफ्ट साइड पे, और 18 और 15 को कंबाइन करेंगे. ये पॉइंट समझ में आया? तो these two nodes are combined and it is resulting into 33. 33. Take the next two minimums, 25 and 33. 25 and 33. Merge it. This comes out to be 58. 58 लाना कोई बड़ी बात नहीं थी. सिंपली आप बिना ट्री कंस्ट्रक्ट किए भी बता सकते थे कि 58 आएगा, क्योंकि टोटल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करोगे तो ये 58 आ रहा है. तो डेफिनेटली रूट पे 58 आएगा. यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबका यही ट्री बने, सबका यही ट्री बने. अगर हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करनी है तो आपको 0 1 असाइन करने की जरूरत नहीं है. आप बोल सकते हो कि आई, एस और ई के लिए 3 बिट्स चाहिए. Sorry, 2 bits are required. इस लेवल पे 3 बिट्स, ए के लिए 3 बिट्स चाहिए, यू के लिए 4 बिट्स,
T and O के लिए 5 bits. But if they are asking a question on the basis of coding or encoding, then you need to assign the codes. So let me assign the codes. Let's find out the codes. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. This is 0, 1 and 0, 1. So what is the code for A? We are given with A, E, I, O, U, S, T. What is the code for A? A is here. So for A, it is 111. For E is here. So this is 1 and 0. For I, this is 00. For O, where is O? Here it is. So this is 11001. 11001. Next is U. For this we have 1101. 01. For S, it's 01. For T, this is 11000. अब को अगर बिट्स पूछी थी, बिट्स उतनी ही आ रही है. I, S and E के लिए, E, S and I के लिए 2 bits are there. Is this clear? अब अगर आपसे एवरेज डेटा पूछे, कोड लेंथ, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बिट्स के लिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, just multiply it with the number of bits. So for A, frequency is given as 10. For E, frequency is given as E, I, O, U, S, T. Frequencies are given as 10, 15, 12, 3, 4, 13 and 1. A को represent करने के लिए 3 bits are required. To represent A, 3 bits are required. To represent E, 2 bits are required. To represent I, 2 bits are required. For O, 5 bits are required. For U, 4 bits are required, 2 bits are required, and 5 bits are required. Just multiply it, take the sum, and you'll get the answer. आपके पास total bits आ जाएंगी. Average calculate करना है, you know that it's total bits divided by the frequency. So this comes out to be 30 bits. This is also 30 bits. जिन लोगों को ये समझ में आ गया, can you return the time complexity? Algorithm is clear, right? कैसे वर्क कर रहे हैं वो फंक्शनैलिटी क्लियर है. सो कैन यू रिटर्न द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? 16 बिट्स, 13 into 2 is 26 bits, and this is coming out to be 5 bits. 146 is the total. Okay, total is 146 bits. Total number of bits. If we have to return the average, अगर average calculate करना है, average code length will be simply 146 divided by 58. And that comes out to be, okay, 2.51. I guess it should be greater than 251. Just check it out, okay? But surely it's 146 divided by 58. You can calculate it. N log n. Very good. So every time what we are doing is हर एक step पे हम दो minimums को delete कर रहे हैं. Okay? In order to delete one minimum, it is taking log n time. सेकेंड मिनिमम को डिलीट करने के लिए भी दिस इज टेकिंग log n टाइम. थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट, एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हीप सॉर्ट में, दैट इज टेकिंग log n टाइम. यानी कि एक स्टेप पे, एट वन स्टेप इट इज टेकिंग 3 log n फॉर वन स्टेप. And every time we are considering we are deleting 2 elements, एक बार में हम 2 एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं और एक इंसर्ट बैक कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली तो एक ही एलिमेंट डिलीट हुआ.
लास्ट पे एक एलिमेंट बचेगा, nothing is required. So this means that how many times the step gets repeated? It's repeated जब आप इस पूरे ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये n-1 times repeat हो रहा है, n-1 times it gets repeated. You can check here. This is the first step, 1, 2, 3. This was 4, 5, and this was step number 6. कितने characters given थे? We were given with 7 characters. Right? So this is repeated for n-1 times. If I write here, हम लोग क्या कर रहे हैं? min heap है, min heap tree है. इस min heap tree में से हर step पे हम 2 delete operation perform कर रहे हैं. In order to get the 2 minimum values. 2 elements delete हुए और एक element को insert कर देते हैं. So this means that in order to perform this, 3 log n is required. क्योंकि एक इंसर्शन या एक डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए log n टाइम चाहिए. So this is 3 log n. Now this step for n elements, ये कितने टाइम्स रिपीट होगा? n-1 टाइम्स. क्यों? क्योंकि 2 डिलीट तो किए बट एक इंसर्ट भी कर दिया, तो इफेक्टिवली एक ही एलिमेंट डिलीट हो रहा है. फॉर n elements, this step will be repeated for n-1 times. Now one doubt is there at level 4, can't we put u is equal to 4 in the left hand side? Why did you put that in on the right hand side? I'll go to the previous question. Wait. So this means that time complexity comes out to be a step ke liye, if it is 3 log n, then n-1 steps ke liye, this is 3 log n. For n-1 steps, it will be n-1 into 3 log n. That is nothing but approximately this is order of n log n. So time complexity for Huffman coding is its order of n log n. लेवल 4 आंसर सही आया है, पर कहां पे ऐड किया, क्यों ऐड किया, वो पता नहीं. Now one doubt is there at level 4, can't we put u is equal to c value? If the value is greater or equal, then we are putting that on the right hand side. If it's greater or equal, we are putting that on the right hand side. 4 is equal to 4, so that's why I'm taking that on the right hand side. This is what we did in the previous case also. यहाँ पे भी शायद value same आई थी. In some example it was there. Yeah. तो 5 equal to 5 आया था, तो 5 जो नया कैरेक्टर, जिस नई कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 5 थी, I took that on the right hand side. 10 equal to 10, I put that on the right hand side. प्रशांत, आई गेस आपके डाउट्स इसलिए ज्यादा आते हैं बिकॉज आप बीच में शायद सेशन मिस कर देते हो. जो चीज ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं, 2 बार 3 बार कर लिए, उसी में डाउट होता है. इट्स रियली स्ट्रेंज. एनीवेज, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन. So you can try one more question if you want to. Yes. See, अगर आप इसमें कुछ भी changes करते हो, these are the standard rules. If you are going to make the changes to this one, तो definitely आपके पास code change हो जाएगा. अगर आप right side पे 1 assign कर रहे हो and you are keeping that node on the left hand side, so instead of getting 1, you will be getting 0. तो अगर टोटल नंबर ऑफ बिट्स है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा कि आप लेफ्ट साइड पे ले रहे हो या राइट साइड पे ले रहे हो. बट अगर कोड एनकोडिंग या डीकोडिंग पे क्वेश्चन आ गया, तब जरूर आपका आंसर गलत आएगा. ओके. देयर इज वन मोर क्वेश्चन, यू गाइस कैन ट्राई इट लेटर. तो नेक्स्ट सेशन में वी कैन डिस्कस दिस. ओके.
I got this doubt while solving this question क्योंकि पिछला question मैंने solve किया था, you were just listening and not sure whether you were listening or not. But definitely that's very much true कि जब आप खुद solve करते हो doubts तभी आते हैं. इसलिए मैंने बोला कि doubts आते हैं तो Telegram group में आप post कर सकते हो. So you can try this question later. This is based on the same format. As you have understood the concept, then easily you can try it. I was unable to decide which side I should take. It's very simple. If it's greater or equal, go to the right side. If it's smaller, go to the left side. इसके अलावा और कोई जब भी आप दो elements को compare करते हो, इसके अलावा और कोई comparison result आता ही नहीं है. Either it will be smaller or greater or equal. That's it. All right. Next one is optimal merge pattern based on the similar concept, similar to Huffman coding. Okay. Optimal merge pattern का basically idea क्या है? You will be given with you can consider that कि आपको कुछ n number of files given है and at a time you can merge two files. Goal is कि छोटी छोटी files को merge करके आपको एक single file बनानी. अब जब आप फाइल्स को मर्ज करोगे छोटी फाइल से एक बड़ी फाइल बनाने के लिए तो आपको रिकॉर्ड्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा. राइट. सो वी वांट कि फाइल भी बन जाए और कम से कम रिकॉर्ड मूवमेंट हो. गोल इज टू फाइंड आउट टू गेट द लेस नंबर और मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट. ओके. सो गोल इज टू combine all the files to a single file. ग्रीडी टेक्निक है तो दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इसमें जिसमें भी आपके पास कम से कम रिकॉर्ड मूवमेंट्स होंगे. दैट विल बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी minimum number of with minimum number of record movements. So as the input for the question, you will be given with the files with the number of records present in that file. For example, I'm taking three files X, Y, and Z. These are the three files. And number of records present in each file will also be given to you, just like we were given with the probability of frequency of each character. तो यहाँ पे आपको number of records given होंगे. Let us assume that this is 30, 15 and 35. That means file X में 30 records are there, in file Y 15 records are there, file Z 35 records are there. At a time we can merge two files. अगर हम manually करके देखते I can take any two files first. Let's assume that I'm taking X and Y. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि मैम यहाँ पे भी स्मॉलर और ग्रेटर का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हम कोई कोड जनरेट नहीं करने वाले. सो इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर कीपिंग द स्मॉलर वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ओके. तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें कोड जनरेट नहीं करना. I'm repeating this point again. Huffman coding में भी हम कब 0 या 1 या लेफ्ट और राइट को कंसिडर करते हैं जब हमें कोड जनरेट करना है या फिर आपको कोडेड फॉर्मेट गिवन है, डिकोडिंग करनी है. इनकोडिंग डिकोडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. नंबर ऑफ बिट्स हम बिना 0 1 असाइन किए लेवल के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं. ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में कोई एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं है. So you are free to choose the smaller value on either of the side. Okay. 30. I'm taking the next file. First of all, I'm merging X and Y. This is 50. Merge करने के बाद जो file बनेगी उसमें 45 records होंगे. Then I'm merging it with the third file, that is 35. Z. Total number of records कितने हो गए? 80. ठीक है, this is one case. Other cases, instead of taking X and Y first, I'm taking X and Z first. X और Z ले रही हूँ मैं. So this is having 30 records. This is having 35 records. Merge करने के बाद we'll get here 65 records. Y में 15 records है.
and here this will be returning 80. एक फाइल बनी जिसमें 80 रिकॉर्ड्स आ गए. थर्ड केस, यहाँ पे xy पहले लिए, then xz, then I'm taking yz first. Y में records are 15, Z में records are 35. This is returning 50. I'm taking X and total records are 80. तो anyhow जब आप merge करोगे total records same ही बनेंगे, right? जैसे पिछले केस में total frequency वही आ रही थी जो आपके पास total sum था. This is 80. But if we talk about the number of record movements, तो पहले केस में कितने records move हुए? In case 1, let me call this as case 1. This is case 1, this is case 2. This is case 3. In case 1, what are the number of record movements? Number of record movements. कितनी रिकॉर्ड मूवमेंट्स होंगी? पहले आपने एक फाइल से 30 रिकॉर्ड्स को मूव करवाया, 15 रिकॉर्ड्स को मूव करवाया. सबसे पहले स्टेप में 45 रिकॉर्ड्स मूव हुए. उसके बाद दो फाइल्स को मर्ज किया, एक में 45 रिकॉर्ड्स थे, दूसरी में 35 रिकॉर्ड्स थे. 45 रिकॉर्ड्स को उठा के एक बड़ी फाइल में रखा, 35 रिकॉर्ड्स को उठा के एक बड़ी फाइल में रखा. तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स मूव हुए? 80 records, right? Basically what I am doing is I am taking the sum of the internal nodes. So that is resulting into 125 record movements. यानी कि अगर आपके पास फाइल में 80 records थे, total 80 records थे, total record movements are 125. Similarly in case 2 कितने record movements होंगे? First of all we combine these two files. 30 records को रखा, 35 records को रखा, 65 record movements. Number of record movements it is 65. और उसके बाद 65 records उठा के एक बड़ी फाइल में रखे और 15. So this is 80. That is resulting into 145 records. In case 3, here it is returning number of record movements. Number of record movements in case 3 is 50 plus 80. That comes out to be 130. इसके अलावा और कोई possibility थी? There was no other possibility. Case 1, case 2 and case 3. In which case we are getting the minimum number of record movements. This is 130, 145 and 125. So obviously this is an optimal solution. In this case we are getting optimal solution. In this case we are getting the minimum number of record movements. If you observe here, आपके पास सबसे कम record movements कब आए? When we started by merging the two files with the minimum number of records. पहली दो minimum files ली and we are getting the minimum number of record movements. Okay, idea is जब जो भी आपके पास फाइल बन गई, हर एक स्टेप में आपको रिकॉर्ड्स को मूव करवाना है. अगर इनिशियल स्टेप पे मोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर तो हर बार वो ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करेंगे. यही चीज हमने हफमैन कोडिंग में बोला था. वी ऑलवेज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द ट्री विद द टू मिनिमम वैल्यूज एंड हियर आल्सो वी आर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट. इज दिस क्लियर? क्वेश्चन आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट्स पे भी आ सकते हैं और दे में आस्क फॉर द नंबर ऑफ कंपैरिजंस. अगर मुझे दो फाइल्स को मर्ज करना है, इन द वर्स्ट केस व्हाट आर टू सॉर्टेड फाइल्स आर देयर, दो सॉर्टेड फाइल्स है, इनको मर्ज करने के लिए कितने कंपैरिजंस चाहिए? मर्ज करने के लिए यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने मर्ज सॉर्ट में किया था. व्हाट आर द वर्स्ट केस नंबर ऑफ कंपैरिजंस, वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजंस चाहिए टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट? अगर n एलिमेंट्स है तो n-1, फर्स्ट लिस्ट में n/2 एलिमेंट्स है, सेकंड लिस्ट में n/2 एलिमेंट्स है, दोनों को कंबाइन करके n बनेंगे. वर्स्ट केस में n-1 कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड, राइट? तो या तो क्वेश्चन आपके पास रिकॉर्ड मूवमेंट पे आएगा या फिर नंबर ऑफ कंपैरिजंस पे आएगा. अगर आपको मर्ज करने में वर्स्ट केस और बेस्ट केस में हमने नंबर ऑफ कंपैरिजंस कैसे फाइंड आउट किए, तो एक सेशन मिलेगा आपको मर्ज सॉर्ट के ऊपर. जस्ट गो एंड चेक दैट.
ओके मैंने वहां पे मर्ज फंक्शन डिस्कस किया है कि कैसे मर्जिंग होती है बाय टेकिंग द एग्जाम्पल. ओके सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो दो ही क्वेश्चंस बन सकते हैं ईदर ऑन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट्स और नंबर ऑफ कंपैरिजंस. Anyone having any doubt? Let's discuss one question and then we'll end our discussion. Let us assume that we are given with 5 files. File A is having 10 records, file B is having 20 records, file C is having 15 records, file D is having 5 records, and file E is having 25 records. What are the total number of record movements required? You have to construct a binary tree. Construct the binary tree. कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? एवरी टाइम बाय टेकिंग द टू मिनिमम्स. तो अरेंज कर लो. दिस विल बी डी having 5 entries, A having 10 entries, C having 15 entries, B having 20 entries, E having 25 entries. Start with the two minimums. I'll be taking out the first minimum. I'll get 5 here. How many trees we need to make? Ultimate goal is to return the minimum number of record moments. तो वो एक ही ट्री देगा. वो सिर्फ जो पहले एग्जाम्पल में मैंने तीनों बनाए हैं वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए था. अदरवाइज एवरी टाइम विल बी टेकिंग द टू मिनिमम्स, तो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग अ वन ट्री ओनली. नेक्स्ट मिनिमम इज 10. दिस इज फॉर A. Merge it. This is resulting 15. 15 को इंसर्ट करेंगे मिन हीप ट्री में वापस. टेक द नेक्स्ट टू मिनिमम्स 15 एंड 15. C को मैं राइट साइड पे ले रही हूँ. 15. Merge it up. This is resulting into 30. 30 will be present somewhere here. Take the next two minimums, that means 20 and 25 को लेने, right? So take 20 and 25. I'm taking here 20 and 25. आप लेफ्ट साइड पे भी ले लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 25. Merge it. This is 45. अब नेक्स्ट स्टेप पे किसको मर्ज करेंगे? 30 and 45 को. This comes out to be 75. Number of record moments. जिस तरीके से हमने हफमैन कोडिंग में ट्री कंस्ट्रक्ट किया था, मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज किए. सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड मोमेंट्स. सबसे पहले आपने दो फाइल्स को मर्ज किया. ए एंड डी को कितने रिकॉर्ड्स मूव हुए? 15. फिर इस फाइल को और सी को मर्ज किया. 30 रिकॉर्ड्स. बी और ई को मर्ज किया. 45 रिकॉर्ड्स मूव हुए. Then 75 records. So basically I need to take the sum of the internal nodes. So this is 15 plus 30 plus 45 plus 75. This comes out to be 80, 120 and 150, 165. So optimal solution is 165. Okay. So minimum number of record moments, if they are asking for the minimum number of record moments, then it is 165. Okay. If they are asking for the number of comparisons, दो फाइल्स को मर्ज करके आपके पास सिंगल फाइल बन रही है 15, बट एक फाइल में 5 रिकॉर्ड्स है, दूसरे में 10 है, तो वर्स्ट केस में मर्ज करने के लिए कितने कंपैरिजन आएंगे? इट माइट बी 14, right? n minus 1. So number of comparisons will be 14 plus 29 plus 44 plus 74. 74. And that comes out to be 161. तो क्वेश्चन या तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट्स पे आएगा या फिर नंबर ऑफ कंपैरिजंस. Since the way we are dealing with the optimal merge pattern, every time we are taking the two minimums from the min heap tree, then inserting one, then obviously अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगी इस एल्गोरिथम की. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न इज आल्सो n log n.
This is also n log n. Okay. So this is all about optimal merge pattern. So guys, do the practice on the basis of Huffman coding, क्योंकि Huffman coding से पहली चीज तो काफी frequently questions आए. Second thing is it's also the same concept is also used in the optimal merge pattern. अगर Huffman coding clear है तो optimal merge pattern is comparatively easy, क्योंकि इसमें हमें नोड को लेफ्ट साइड पे ऐड करना है या राइट हैंड साइड पे ऐड करना है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. बट मेक श्योर कि जब आप दो नोड्स को मर्ज कर रहे हो वो करेक्ट लेवल पे ऐड हो रही हो. डायरेक्टली आप -4 कर सकते हो प्रशांत. मैंने इसलिए अलग से लिखा है ताकि आप मर्ज के साथ रिलेट कर पाओ. 4 नोड्स है, हर एक बार एक एक कम हो रहा है तो इट्स -4. मैंने डायरेक्टली 161 कैसे लिखा है? लिखने के लिए मैंने एक एक कम वैल्यू करके लिखी है. इतनी फ्रिक्वेंटली मैंने सम कैसे रिटर्न कर दिया? बिकॉज आई सिंपली सब्ट्रैक्टेड 4 फ्रॉम 165. Okay, so this is all about this session. I hope that this is clear to everyone. So if you want to guys cover the whole syllabus in detail for GATE is tarike se, so for this we have a super coaching sale, that is a June Bonanza sale. Under the sale, you will be getting 65% off plus 25% off and success guaranteed. Apart from that, extra validity भी मिल रही है, that is 33%. यानी कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे. Okay, so this is 4 months extra will be given to you. So if you want to get this subscription, this is for 8,999 by using the code. Obviously, this is the price after applying the coupon code, that is Shefali S. And I'll be sharing this PDF in the Telegram group. Okay, so you guys can join the group. Shefali ma'am Testbook, PDF, doubt solving, direct interaction, quiz, and the polls. Let me quickly share my screen. Just let me know if it is visible. Hope the screen is visible. So when you go to this video, go to the description, and under the description you'll be able to see here the masterclass. Okay, this is the link for the masterclass जो daily 8 बजे होती है, जिसमें हम previous year questions करते हैं GATE के. And this session is obviously useful for the ISRO aspirants as well as GATE वालों के लिए तो है ही है. Apart from that, NIC की link available है super coaching. This is the third link to join the Telegram group, that is GATE super coaching Telegram, and fourth link is for GATE super coaching. If you want to join this, just click on this link. It will take you to the home page. आप यहाँ पे सेल देख सकते हो. जो मैंने आपको प्राइस बताया दैट वाज लेस देन दिस, वो कैसे मिल रहा था आपको? बाय अप्लाइंग द कूपन कोड. अदरवाइज यू विल बी गेटिंग अंडर द सेल आल्सो, यू विल बी गेटिंग 1 year subscription for like 9599. Under the super coaching, there will be the recorded sessions as well as the live sessions. Recorded sessions में complete syllabus covered है, detail में covered है, एक topic पे multiple sessions available है. So it's up to you which one you wanna follow. And apart from that, live sessions में will be having the quick revision. Quick revision का मतलब ये है कि कुछ topics छूट जाएंगे, सारे topics cover होंगे. The only difference is detailed session में हम n number of examples लेते हैं to explain the concept. In the quick revision, we'll be taking 1 or 2 examples to explain the concept. That's the only difference. And apart from that, live series में dedicated doubt solving sessions will be there, previous year questions will be there, so you can make use of that. So if I go to the full courses, there are lot many full courses playlists available by the Gate Forum, by Digimento, by Nimbus Learning, and by Testbook itself. That is provided by me and my team. So you can see the rating of all the courses. It's really, really very good. So ये जितने भी sessions हैं, these are in the English language. That means जिन students को हिंदी या English मतलब language का अगर आपको कोई issue है तो it won't be there. So you can follow it. And if you want to join the series, you can have a look over the study notes. अभी आप इनको open नहीं कर पाओगे. Study notes will also be provided in the PDF format. So in general mathematics, general aptitude, formula notes and computer science engineering notes. In the computer science engineering, हर subject से detail notes मिलेंगे. You can see अभी मैं इसको और explore नहीं कर सकती क्योंकि lock है.
because subscription is not active. And for formula notes from each subject, there will be only one PDF, because in the detailed notes, concept is written with the examples, solved questions भी है, but जो formula notes है उनमें सिर्फ और सिर्फ important points, important formulas ही है. That's why this is useful when you are going to revise your concepts. But जब आपको study करना है तो उस टाइम पे आप detail notes को ही prefer करोगे. Now, if we go to the pricing, we have three plans. Under the sale, one extra plan is added, that is for 9 months. So 9 plus 3 months, 12 plus 4 months, 33% extra validity है. So total ये kind of 1.5 year के लिए हो गया. 1 year plan, 1.5 year. 2.2 year 8 months and 4 year plan. I don't think 4 year plan की आपको जरूरत. So if you are in second year, first or second year, go for 24 plus 8 months plan. If you are in third year or fourth year, or you can go for 12 plus 4 months. And if you are in the final year or pass out, then dedicatedly you can prepare for the gate exam. So in that case, I'll suggest you to go for just a 9 plus 3 month subscription. एक बार टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे गेट लेवल पे, तो ऑब्वियसली इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो जिसमें कंप्यूटर साइंस के को टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ रहे, डेफिनेटली यू विल गेट दैट. इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, और टू इफ यू नीड मेंटर असिस्टेंस यू कैन आल्सो रिक्वेस्ट फॉर अ कॉल. Okay, and if you have to apply a coupon code, just go to the coupon code. Here by default some coupon code is applied, just replace it with Shefali. Yes, just apply it. So ये जो prices हैं, these are after applying the coupon code. Okay, ये already क्यों discounted price show कर रहा है, because when I'm clicking on this link, already इस पे coupon code आपने देखा कि already it was applied, right? So just replace that coupon code with Shefali S. I hope this is clear. अगर फिर भी आपको कोई difficulty है, you can post that in the Telegram group, and definitely your query will be resolved. So this is all about Huffman coding and optimal merge pattern. Anyone having any doubt? So in the next session, we will be talking about minimum spanning tree, minimum cost spanning tree. दो algorithms आएंगे इसमें, Kruskal's and Prim's. Guys, there is one important announcement. Tomorrow I'll be on off, तो कल कोई भी session नहीं होगा. ये जो topic मैंने आपको बताया है, this is for Thursday. ये हम Thursday को cover करेंगे. Tomorrow there will be no master class, no YouTube session. Tomorrow means Wednesday, no class will be there. Okay. Apart from this, we have a fixed structure of the classes. Monday to Friday, I'm taking 2 sessions, one on the YouTube. Parallelly, guys, you can write your queries in the chat section. अगर आपको कोई भी doubt है, you can write that in the chat section. 8 p.m. to 8:30 p.m. This is on YouTube, and this is on Testbook platform masterclass. But definitely you need not to get any subscription for this. It is free. YouTube तो आपको पता ही है, need not to mention. Under the YouTube sessions, I'm covering the concepts. ये जितने भी concepts cover किए हैं, इसके basis पे जो भी questions आए हुए हैं, वो सारे के सारे हम master class में कर रहे हैं. PYQs from GATE. And if you are targeting on ISRO exam as well, then you can join the YouTube session on Saturday and Sunday at 7 p.m. This is 1 hour session, 1 or 1.5 hour session from 8 p.m. to 7 p.m. to 8 p.m. In this, I'm covering the previous year questions of the ISRO papers. Okay, just one more day to go for the application of ISRO. So deadline for ISRO is इसरो का फॉर्म फिल करने की डेडलाइन 14th of June.
It's the high time to fill it. अगर अभी तक आप लोगों ने fill नहीं किया इसको fill कर लो बेटा. And age limit is 28 years. Number of vacancies are 47. Almost 3.5 साल के बाद आई हैं, तो better है कि फायदा उठा लो इनका. Number of vacancies are 47. Any doubt? This is all from my side. I guess जो भी आपको additional information चाहिए थी, that is also provided. Tomorrow I'll not be coming live. I'll not be taking any live session. अगर आपने बीच में कोई भी session miss किया है, then you can go through the recorded sessions. Okay? I guess there was no query. So this is all from my side, guys. Thank you so much. I'll see you at 8 p.m. in the master class, which will be having the discussion over the previous year questions on divide and conquer approach. Uh, so please join the session on time because it's just half an hour session. उसमें भी अगर हम 5-10 मिनट late join करेंगे तो I don't think कि बहुत ज़्यादा चीजें बहुत ज़्यादा time बचता है. So please don't be late. Thank you. Bye bye.